What is enangibles? Enangibles are nothing but the large collection of the identical unit, atom, molecule, or particle. So, classification of enangibles, and this is most important. And this topic has already come in the VHU exam, and it may be come in the CSIR NET also. So, classification of enangibles. First enangibles is microcanonical enangible. Microcanonical enangibles. Then the second one is canonical enangible. Canonical enangible. And the third one is grand canonical enangible. Grand canonical enangible. So what is microcanonical enangible? So these are some few things you have to just keep in your mind. This is number of particle V and U, that is internal energy in this system are constant. तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल V, मतलब शॉर्ट में लिखे तो N V और U तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है। और इसी प्रकार सिस्टम को अगर हम थर्मोडायनामिक्स, अपन क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम. You have already read in this thermodynamics that what is isolated system. So this is called isolated system. And in the canonical enangibles, this is number of particle. In short, I have to write that is N, V and T constant. That means here we see that the N, V, T are constant. That means the energy is exchanging over here. Energy is exchanging here. So if energy is exchanging over here, so this type of system, if we compare this type of system to the classical thermodynamics, what is this? This is called closed system. This is called closed system. And in this grand canonical enangibles, V, T and U are constant. But keep in your mind that here U is the potential. Here is the potential. And this type of system is called open system. Okay. This type of system is called open system. Okay, this is all about the enangibles. So these are the large collection of the identical unit, atom, molecule and the particle. And these are the three canonical enangibles. And these are some properties of the canonical enangibles. Just we have to keep in our mind. Okay, next we move towards the point. That is number of wedge. ये बहुत important point है. Number of wedge या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्टेट. तो इनके बारे में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के बारे में. तो सबसे पहले मैक्सवेल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे. सबसे पहले मैक्सवेल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बोसोन के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स बोस-आइंस्टाइन के बारे में, फिर हम फर्मी-डिराक के बारे में बात करेंगे. देन वी टॉक अबाउट द फर्मी-डिराक. सो इन द केस ऑफ द मैक्सवेल, there is no restriction. You have to just keep in your mind that always see the particle nature, whether it is distinguishable or indistinguishable. So first point you have to just keep in your mind to do a question before, that is that we have to just check the particle nature, that is distinguishable, whether it is distinguishable or indistinguishable. So in this Maxwell statistics we have know that the particle nature is distinguishable. So the number of wedge. So यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज के बारे में बातचीत करेंगे. सो हियर द नंबर ऑफ वेज, द फर्स्ट केस इज दैट इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड वी नो दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. तो नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज m का पावर n हो जाएगा. व्हाट इज m? m इज द स्टेट एंड व्हाट इज n? दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. ओके, इन केस ऑफ द बोसोन दिस इज, हाँ और एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे अगर आपका डीजेनेरेसी की फॉर्मेट पे पूछे, डीजेनेरेसी की फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड. दिस इज डीजेनेरेसी की फॉर्मेट में, तो दिए आएगा n फैक्टोरियल पाई आई जी आई का पावर स्मॉल एन आई ओपन एन आई फैक्टोरियल. सो व्हाट इज n? दैट इज टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल. So we have to just write over here n equal to total number particle, and the gi is the degeneracy,
and small n is the ith energy level, मतलब ith number particle, मतलब individual particle given in the energy state, individual particle given in a energy state. So this is most important, that is n factorial into pi I gi के power ni, and pi is nothing but multiple power. In case of the Bose-Einstein statistics, the formula for finding number of wedges, that is W equal to n plus m minus 1 factorial upon n factorial, that is m minus 1 factorial. So what is m, what is n, I have already told it. And in case of the Fermi-Dirac, the number of wedge is m factorial upon m minus n factorial. And in case of degeneracy, just use n, आप क्या करोगे डिजेनरेसी में, just replace gi in place of n, in place of m. यहाँ पे आपको क्या करना है, gi को रिप्लेस करना है इन प्लेस ऑफ m की जगह आप क्या करोगे j, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ वेज में लिखूंगा तो ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल upon gi minus 1 factorial. So this is the Bose and Fermi-Dirac, and these are some ways to find the number of ways for the Fermi-Dirac and Maxwell and Bose. One important point is that I have just forgotten to write in the board, that is for the Maxwell. Two more remain formulas here, you have to just keep in your mind. That is in Maxwell statistics, या फिर Maxwell Boltzmann statistics, if restriction is given, that is वो restriction क्या हो सकता है, वो restriction है एक एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल रहेगा, वन एनर्जी लेवल में एक, that is one particle occupy one energy level, the number of ways is m factorial upon m minus n factorial. This formula is important. Okay, so these are some ways you have to just find. One last more thing, that is if restriction is given. यहाँ पे भी और एक बात है, if restriction, और वो restriction क्या है कि more than one particle lie on one energy level. तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब ये मैक्सवेल का ही प्रॉपर्टी है, ये दोनों मैक्सवेल का ही प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ वेज होगा दैट इज n फैक्टोरियल ओपन ni फैक्टोरियल nj फैक्टोरियल, दैट इज दिस. सो दिस इज कैपिटल N. Always keep in your mind that the capital N is the total number of the particle and ni is the number of particle in the individual energy level. So this is all about the number of wedge. Find the number of ways in the form of to find the particle, that is in the Maxwell, Bose-Einstein and Fermi-Dirac. Is all about it. Okay.